Hi everyone, my name is Dilpreet and welcome to Grammar Series. आज के वीडियो में हम बात करेंगे prepositions between and among के बारे में, right? So let's begin. The most common use of between is when something is in the middle of two things or two group of things. Between का use तब होता है, normally तब होता है जब हम दो चीजों के बीच की बारे में बताते हैं, राइट? सो कोई भी दो पीपल, टू थिंग्स या टू प्लेसेस के लिए भी हम बिटवीन का यूज करते हैं. सो बिटवीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टाइम एंड प्लेसेस दैट इंडिकेट टू एंड पॉइंट्स ऑल्सो, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अमन इज सिटिंग बिटवीन प्रवीण एंड सोनाली. सो अमन दो लोगों के बीच में बैठा है. आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, द बॉय इज सिटिंग बिटवीन टू बॉल्स, राइट? अगेन प्लेसेस के लिए यूज होता है जब एंड पॉइंट्स की हम बात करें. जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन अमृतसर एंड न्यू दिल्ली. सो अमृतसर और न्यू दिल्ली एंड पॉइंट्स है. ये दोनों प्लेसेस एंड पॉइंट्स है और उनके बीच में शताब्दी एक्सप्रेस चलती है. मीन्स अमृतसर से स्टार्ट होके न्यू दिल्ली एंड वाइस वर्सा, न्यू दिल्ली से स्टार्ट होके अमृतसर तक. so, इन दोनों प्लेसेस के बीच में शताब्दी एक्सप्रेस चलती है. सो बिटवीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्लेसेस दैट इंडिकेट टू डिफरेंट एंड पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमंग की. द मोस्ट कॉमन यूज फॉर अमंग इज व्हेन समथिंग इज इन और विद अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू, सेवरल और मेनी थिंग्स. यानी कि अमंग का जो यूज होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है. मीन्स तीन या उससे ज्यादा, मीन्स a few, several या many things के लिए. For example, I sat among the other students. मतलब मैं और सारे बच्चों के साथ बैठा. मतलब आप उनमें से एक थे, आप सबके साथ बैठे, right? Another example, distribute the sweets among all means ये मिठाइयाँ जाके सब में बांट दो, right? We also use among to talk about things which are not clearly separated because they are part of a group or crowd और mass of objects. जैसे कि आपको मैंने बताया, I sat among the other students, right? या आप लिख सकते हैं कि distribute the sweets among all. या आप कह सकते हैं कि let us talk about this topic or let us send this email among all the students, right? Or let us share this information among all the people. तो among का यूज जब भी हम करते हैं तो वो दो से ज्यादा के लिए होता है. नॉर्मली अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप है ना, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? आज के लिए इतना ही. सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस इफ यू हैव एनी डाउट्स. टेक केयर, बाय बाय.